So starting off with cell structure and function, before we start off with the syllabus, दो तीन चीजें which I always tell at the start of my classes कि मैं सवाल बहुत पूछता हूँ, इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आई एम गोइंग टू टेस्ट यू. ठीक है, आई ऑलवेज अज्यूम मेरे बच्चों को कुछ भी नहीं आता. ठीक, दैट इज नॉट बीइंग तो तुम लोगों को बाकी कुछ नहीं आता. आई जस्ट वांट टू नो व्हाट यू नो, ताकि वी कुड बिल्ड अपॉन टू दैट. इट्स इजियर दैट वे रादर देन मैं तुम लोगों को बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट दूं और तुम लोगों को कुछ आ ही नहीं. तो आई आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू नो कि तुम लोगों को कितना आता है, सो दैट आई कैन इम्प्रोवाइज ऑन व्हाट आई एम गोइंग टू टीच. ठीक है, तो अगर कुछ नहीं भी आता, जस्ट ट्राई टू थिंक. ठीक है, the whole purpose of asking you questions is so that you guys can think. दूसरी बात, मेरी राइटिंग बहुत हसीन है, तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए, प्लीज यू आर मोर देन वेलकम टू आस्क कि मैंने क्या लिखा है. आई वुड नेवर बी ऑफेंडेड. All right. So, starting off with cell structure and function. अब सबसे पहले हमारे पास चीज क्या आती है whenever we talk about the cells or cell structure and function, कि sir, what do we even mean by the word cell? ये cell होता क्या है? Can anyone tell me what a cell is? हाँ जी, anyone? What do we mean by the word cell? Cell क्या होता है? Main unit of our body. अच्छा, so basic unit of life, very good. ठीक है, building block of a living organism, basic functional unit of life, very good. देखो, very good guys, very good. अच्छा, अब देखो, आप एक चीज, अगर हम लोग बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक की बात करें, so like everything else, like I have a phone right in front of me. So वो the basic unit that phone is made up of, I'm made up of the very same basic unit. जितनी भी चीजें हैं, anything that comes under the heading of matter. Matter हमारे पास क्या होता है? Anything that occupies some volume and has some mass. Makes sense? So I'm an example of matter. The tablet that I'm using is an example of matter. The table that I'm on is an example of matter. The plant, I have a small plant that I named Leonardo. Uh, so that is an example of matter. तो जितनी भी चीजें हैं जो मैटर से बनी हुई हैं, एनीथिंग दैट इज मेड अप ऑफ मैटर, उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक है, that is atoms and molecules, right? Atoms to be specific. So the smallest unit या फिर the building block of anything is what is an atom. लेकिन अब अगर हम लोग सेल्स के बारे में बात करें, what separates the living or या फिर cells from non-living organisms is a fluid that we call as protoplasm, right? या अगर हम लोग ये बात करें कि organisms or everything else को एक differentiate क्या कर रहा है, it's basically life. So whenever we talk about the cell, हम सेल को कैसे डिफाइन करते हैं? हम कहते हैं सेल इज द स्मॉलेस्ट या बेसिक कैसा यूनिट ऑफ लाइफ? फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, राइट? अगर हम लोग बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ लिखें तो इसमें कोई मसहर्ज नहीं है, बट व्हाई एम आई इंक्लूडिंग द वर्ड फंक्शनल? इसका भी एक वजह है. अगर हम लोग बात करें सेल्स की, कैन यू गाइस नेम सम सेल्स फॉर मी? Like I'll start off with the red blood cell. Let's एक type of cell हमारे पास red blood cell है. Do we have any other cells? We have the white blood cells. Very good. White blood cells के साथ साथ blood के अंदर हमारे पास और क्या होते हैं? Platelets होते हैं. Very good. So, lymphocytes white blood cells के अंदर आते हैं. रेहान, very good बच्चे. Very good. We have neurons, right? Nephrons are tissues मेरा बच्चा. राइट, नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स. अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की, हमारे पास मसल सेल्स आ जाते हैं. अगर हम लोग थोड़ा सा एनिमल से मूव करके प्लांट्स के पास जाए, फॉर फोटोसिंथेसिस प्लांट्स के पास मीसोफिल सेल होते हैं. प्लांट्स की रूट के अंदर रूट हेयर सेल्स होते हैं. मेक सेंस? राइट. सो अब अगर हम लोग वीव लिस्टेड डाउन एपिडर्मल सेल्स. वेरी गुड मेरा बच्चा.
So we've listed on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cells, right? Xylem and phloem are tissues, bache. So if you were to talk about all of these cells that we have written down, तो हम लोग क्या देख रहे हैं? Every cell that we have right here, every cell that we have right here has a particular function, has a particular word function. For example, अब मैं बात करूं red blood cells के बारे में. Red blood cells हमारे पास they transport oxygen and carbon dioxide. White blood cells, phagocytes and lymphocytes वो immunity में help करते हैं. Platelets blood clotting करवाते हैं. Neurons they generate and transmit the nerve impulses. Muscle cells contract करते हैं, relax करते हैं ताकि एक organism, ये मैं for example if I'm talking about a human, an animal, it can move, it can carry out locomotion. प्लांट्स के अंदर मेसोफिल सेल्स फोटोसिंथेसिस करते हैं. रूट हेयर सेल्स वो वाटर और मिनरल आयंस को अब्सॉर्ब करते हैं. नाउ when we think about it, no cell can carry out the function of another cell. Every cell has a particular function. For example, I took an organism, I took an animal, और उसमें से सारे मैंने red blood cells remove कर दिए. Can any other cell in that animal, can the platelets in that animal transport oxygen and carbon dioxide? No. क्या उस ऑर्गेनिज्म की जो वाइट ब्लड सेल्स हैं न्यूरॉन्स की तरह क्या वो नर्वस इंपल्सेस जनरेट ट्रांसमिट कर सकते हैं? नहीं. एक प्लांट के अंदर अगर मैं रूट हेयर सेल्स हटा दूं तो क्या मीजोफिल सेल्स वाटर और मिनरल आयंस को अब्सॉर्ब कर पाएंगे सॉइल से? नहीं कर पाएंगे. So every cell that we have, every cell that we have listed down here, and every cell that we have has a particular function. And hence we say the cells are the basic कैसे unit of life? Functional unit of life. बात समझ में आ रही है बच्चों? अच्छा, अब फिर एक बात आती है कि सर ओके why, अच्छा एक और चीज मेरा बच्चा, स्टोमेटा is an opening, it's a structure, it's neither cell, neither tissue, neither an organ. बस एक ओपनिंग है, जिस तरीके से मेरी नॉस्ट्रल्स है ना, बट they're just there, एक खाली स्पेस है. ठीक है. अच्छा खैर खैर खैर, मूविंग ऑन. अब हम लोग एक और चीज समझते हैं. Now that we know what cells are, तो सर how is cell a unit of life? Why does the laptop, the phone, the tablet that we are using, उसके अंदर लाइफ क्यों नहीं है? उसके अंदर सेल क्यों नहीं है? You see what happens is, अगर if there's anything that deserves that definition, basic unit of life, functional नहीं, basic unit of life, that thing is a fluid, that thing is a jelly like fluid that we call as protoplasm, right? How do we define protoplasm? हम protoplasm को कहते हैं कि भाई it's a basic unit of life. अब कहने का मकसद क्या होगा? सर व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द बेसिक यूनिट एंड व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द बेसिक फंक्शनल यूनिट? देखो बच्चा लोग, प्रोटोप्लाज्म खुद क्या है? इट्स अ जेली लाइक फ्लूइड विद डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस. इट वेयर ऑल द राइट केमिकल रिएक्शंस, अगर हम लोग साइंटिफिकली बात करें ना, protoplasm is basically the thing where all the right reactions are going on that are basically giving rise to life, that are basically generating life. The non-living things, they lack this protoplasm. बात समझ में आ रही है? अब होता हमारे पास क्या है? Let's think about it this way. Whenever I teach in schools or in colleges, तो ज्यादातर मैं I don't use my tablet. What I use are the board markers, and I teach on the board. So let's say if I would have a board marker, उस बोर्ड मार्कर के अंदर एक इंक की कार्ट्रिज लगती है, राइट? दैट कार्ट्रिज हैज टू बी फिल्ड विद इंक. सो लेट्स से अगर मेरे पास बोर्ड मार्कर नहीं हो, सिर्फ उसकी इंक हो, कैन आई राइट विद द इंक ऑन द बोर्ड? क्या मैं सिर्फ इंक से बोर्ड पर लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता. अच्छा, अगर मेरे पास सिर्फ मार्कर हो और उसके उसके अंदर इंक नहीं हो, कैन आई राइट विद दैट एम्प्टी मार्कर ऑन द बोर्ड? आई कैन नॉट. मुझे क्या करना पड़ेगा? I would have to put this ink into the marker so that that marker can become functional. इसी तरीके से, how is a cell becoming a living structure? We have to put the protoplasm inside of it, right? अच्छा, does anyone know कि हम लोग सेल को लैटिन के अंदर क्या कहते हैं? What do we call a cell in Latin?
पढ़ा तो है तुम लोगों ने कभी ना कभी। We no 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 cellulose is sugar. It's a carbohydrate. We call the cell a site, right? CYTE. अच्छा, अगर तुम लोग देखो, सो वी से हमारे पास फेगोसाइट्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स आर कॉल्ड एज एरिथ्रोसाइट्स. सो द वर्ड साइट बेसिकली मीन्स सेल. जब भी हम इस प्रोटोप्लाज्म को सेल में डालते हैं ना, वो प्लाज्म का मतलब फ्लूइड होता है. प्रोटो मीन्स बेसिक. तो वो बेसिक फ्लूइड नहीं रहता. वो किसका फ्लूइड बन जाता है? सेल का. एंड द प्रोटोप्लाज्म इनसाइड द सेल इज कॉल्ड एज कौन सा वाला प्लाज्म? किसका फ्लूइड? सेल का फ्लूइड. साइटोप्लाज्म. वी कॉल इट अ साइट. बेटा साइट. ये रहा. मेक सेंस गाइस? अच्छा जी. अब इसको देखो. नाउ दैट वी नो दीज टू थिंग्स, नाउ दैट वी नो द बेसिक्स, अब थोड़ा आगे चलते हैं. अच्छा, अब बात ये आती है कि सर, so since we're talking about life, what makes an organism? What makes an organism a cellular organism? देखो बेटे, होता क्या है? टू मेक अ सेल हमारे पास दो रिक्वायरमेंट्स होती हैं. सेल्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, लेकिन सेल को बनाने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती हैं बेटे. The very first thing that we require to make the cell is a border that we call as cell membrane. The second thing that we need in that border is something that is going to give rise to life, and that's the protoplasm. But once the protoplasm goes into the cell, it becomes the fluid of the cell. फ्लूइड ऑफ द सेल को हम लोग इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, लैटिन के अंदर कैसे ट्रांसलेट करते हैं? प्लाज्म का मतलब फ्लूइड, साइट का मतलब सेल, सेल का फ्लूइड, राइट? सो हम लोगों ने कहा कि सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म आर रिक्वायर्ड टू मेक अ व्हाट? अ सेल. ठीक है. बाकी सारी चीजें उसमें हो सकती है, न्यूक्लियस, ऑल द ऑर्गेनेल्स दैट डिफरेंट सेल्स हैव, वो होता ही होता है. ठीक है, वी नॉट सेइंग कि उसमें वो नहीं होते. लेकिन किसी भी चीज को सेल कंसिडर करने के लिए ये दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं. बट आई टेल यू व्हाई. यू सी, व्हेन वी टॉक अबाउट वायरसेस, most there's a debate between the biologists. Some of the biologists say okay, the viruses are living, some of them say they're non-living. Acha, why do some of the biologists say that the viruses are non-living? Is because for a substance to be considered as a living organism, उसमें कुछ properties होती हैं. तो हम लोग बात करते हैं properties of living organisms की. ठीक है. हमारे पास कुल मिला के कुछ 7 प्रॉपर्टीज होती हैं. सब सो वी वी गिव अ न्यूमोनिक फॉर इट. वी से कि भाई every organism should, or anything that is considered to be living, should have Mrs. Gren in it, right? So what do we mean by the word Mrs. Gren? Anything that is considered to be living should be able to carry out movement. Movement क्या होती है मेरे बच्चों? Change in position. Anything that is considered to be living should carry out respiration. Respiration क्या होता है? It's a chemical process जिससे क्या रिलीज होती है? Energy. Anything that is living should be sensitive, should show sensitivity. Sensitivity का मतलब क्या हुआ? कि it could respond to the different stimuli. Stimuli क्या होता है? Any change. For example, you know, as a human, as a mammal, मेरे आंखों में कोई बहुत ब्राइट लाइट शाइन करे, मैं क्या करूंगा? आई एम गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू इट बाय क्लोजिंग माय आईज. दिस इज व्हाट वी मीन बाय सेंसिटिविटी. कोई भी चीज जो कि एक ऑर्गेनिज्म कंसिडर करी जाती है, इट शुड शो व्हाट? इट शुड शो ग्रोथ. वो ग्रो करनी चाहिए. इट शुड बी एबल टू रिप्रोड्यूस. इट शुड बी एबल टू कैरी आउट रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? टू इंक्रीज इट्स नंबर. It should be able to remove the toxic waste substances that it has, and this is called as excretion.
वेरी गुड। और उसको सस्टेन करने के लिए उसको क्या चाहिए होता है? न्यूट्रिशन। वायरस इनमें से कोई भी चीजें नहीं करता, राइट? इट डज नॉट रिस्पायर, इट डज नॉट मूव, इट डज नॉट शो सेंसिटिविटी, इट डज नॉट ग्रो। वो रिप्रोड्यूस करता है, वो रेप्लिकेट करता है, रिप्रोड्यूस इज वुड बी अ रॉन्ग वर्ड, वो रेप्लिकेट करता है, वो अपना नंबर इंक्रीज करता है, बट ओनली व्हेन इट इन्फेक्ट्स अनदर सेल। वो एक्सक्रीशन नहीं करता, उसको न्यूट्रिशन नहीं चाहिए। सो इस और वायरस के पास अगर हम आगे जाके स्ट्रक्चर देखेंगे, कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, कोई साइटोप्लाज्म नहीं होता। तो वायरसेस को हम लोग क्या कहते हैं? कि हम लोग कहते हैं वायरसेस आर ए सेल्यूलर, वो सेल्स नहीं है। आर वी क्लियर टिल हियर मेरे बच्चों? डज एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम सो फार? ऑलराइट, ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन, लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं। नाउ अब हमने बात करी, नाउ वी नो व्हाट अ सेल इज, व्हाट अ प्रोटोप्लाज्म इज। और अगर एक सेल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बना रहा है तो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? नाउ दैट वी नो दिस, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की थोड़ी सी। यस आइला, यू वुड बी गेटिंग द नोट्स। अच्छा, सो नाउ लेट्स टॉक अ बिट अबाउट क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होती है? Classification is a method through which we put different, or we categorize different organisms. For example, हम कहते हैं भाई mammals और birds और reptiles और fish, amphibians are different categories ना। हमने कुछ organisms reptiles में रखे, कुछ amphibians में रखे, कुछ birds में रखे, so on and so forth. एट द वेरी टॉप जब भी हमें एक बिल्कुल बेसिक लेवल के ऊपर क्लासिफिकेशन करनी होती है ना, सो वी लुक एट द नंबर ऑफ सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म। तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं नाउ? वी आर टॉकिंग अबाउट classification of organisms based on what? Based on the number of cells. अब हमारे पास कुछ organisms होते हैं which are made up of a single cell only. Does anyone know what we call those organisms that are only made up of a single cell? Anyone? Starts with a U. Now, those organisms, very good, very good. Those organisms that are made up of a single cell are called as unicellular organisms, right? Similarly, any prokaryotes पाएंगे संदा. We'll come to that. Acha, similarly, those organisms that are made up of more than one cell are called as multicellular organisms. ठीक है? तो हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं? हमने कहा मल्टी यूनिसेलुलर क्या है? दोज ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ अ कैसा वाला सेल? सिंगल सेल ओनली, राइट? अच्छा, अब अगर हम लोग इनकी एग्जांपल्स लें, लेट्स टेक थ्री एग्जांपल्स, राइट? So can anyone tell me, or can anyone give me three examples, or sorry, two examples of unicellular organisms? Let's start off with a very basic one. It starts with a B. Very good. Fran, both of them are amoeba. So let's start off with the bacteria. Right, we all know what a bacteria is. Number two, very good, amoeba. Right, for those who do not know amoeba, have you guys seen the Powerpuff Girls? Right, so there was a cartoon called as Powerpuff Girls. उसके अंदर, there were these germ-like creatures which wore a gangster wali hat, right? The amoeba boys. So amoeba क्या होता है? Amoeba is a unicellular, it's a unicellular organism. ठीक है? अच्छा, एक और. Let's take another example. What about fungi? Right? तो ये तीन एग्जांपल्स हमारे पास किसके आ गए? ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के आ गए. प्लास्मोडियम इज एन एग्जांपल ऑफ अमीबा, बेटे. नाउ
When we talk about multicellular organisms are those organisms that are made of many cells. हमें नंबर देने की जरूरत नहीं है, हमने बस कह दिया कि they're made up of many cells, right? Acha. So now, if I were to ask you guys for examples of multicellular organisms, तो multicellular organisms की मुझे example क्या दोगे तुम लोग? Where humans come under the heading of animals, right? Very good. Plants. एक और. One more. So humans, plants, and microorganisms तो unicellular होंगे ना लक्ष्य? That's why we can't see them. Insects again वो animals के अंदर आ गए. Think about it. Think about it. सोचो. Birds again animals. So okay, I'm gonna tell you. Fungi. Fungi. Again humans are animals. अच्छा अब यहाँ ये बात आई थी कि सर आप क्यों चीटिंग कर रहे हैं? राइट, एल्गी इज अ यूनिसेलुलर अमीबा बेटे. ओके, सो बात है कि सर व्हाई हैव यू रिटन फंजाई ट्वाइस? यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है. Because there are some fungus that act or that exist as unicellular organisms. For example, yeast. कुछ फंगस होते हैं ऑल राइट. सो हमारे पास कुछ फंजाई होते हैं which exist as multicellular organisms. For example, I personally like this fungus on my pizza, the mushrooms. All right. So मल्टीसेलुलर फंगस जो होता है वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की तरह भी एग्जिस्ट कर सकता है और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की तरह भी एग्जिस्ट कर सकता है. मेक सेंस गाइस? यहाँ तक बात समझ में आ रही है सबको? ओके, ऑलराइट. नाउ सो नाउ अब देखो, अब whenever we talk about unicellular organisms ना, तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं which are existing or which is the single cell that is carrying out all of these properties. ठीक है, तो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है कि भाई इट्स अ सिंगल सेल दैट इज कैरिंग आउट all of the properties that we discussed. वो मूव भी कर रहा है, वो रेस्पायर भी कर रहा है, वो सेंसिटिविटी भी शो कर रहा है, वो ग्रोथ भी कर रहा है, वो रिप्रोड्यूस भी कर रहा है, वो एक्सक्रीशन भी कैरी आउट कर रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. मेक सेंस? लेकिन जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, द मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स दैट वी हैव, these organisms they just don't simply exist as cells. अगर हम लोग अपनी बात करें, so are we a clump of cells? No, we are not. हमारे अंदर जो cells हैं वो पूरी तरीके से organized हुए हैं. The cells that we have, they're organized. So the next thing that we'll talk about is how these cells are organized in a multicellular organism. ठीक है जी. अच्छा अब देखो now the next thing that we see is कि हमारे पास ये जो सेल्स हमारे पास हैं, हाउ आर दे गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स. अब इसको देखिएगा. The smallest functional unit that we're going to have are the cells themselves, right? अब होता क्या है हमारे पास? Now what happens is cells of either the same type or of different types, when they join up together, तो हम लोग लिखते हैं कि भाई cells of either the same type
या फिर of different type, when they join up together, they give rise to a particular structure. Can anyone tell me what we call that particular structure? Tissues. Very good. Very good. So whenever cells of the same or of different types, when they join up together, they give rise to tissues. Okay. For example, let's take an example. If I would join up a lot of epithelial cells together, वो epithelium बना देगा. Epithelial cells are cells of the same type, right? Epithelium क्या हो गया? वो tissue हो गया. If we join up the red blood cells, the white blood cells, and the platelets together, what are they going to get me? It's going to get me blood. Blood हमारे पास क्या है? Blood is also a tissue. Blood is also a connective tissue, right? इसी तरीके से मेरे बच्चों, अगर हम लोग tissues को join up करें, now these tissues can either be of the same type या फिर different type. When they join up together, what do they give rise to? They give rise to organs. Very good. Very good, Lennon. Now, these organs, hamesha of what? Of different types. They are going to give rise to an organ system. और बहुत सारे organ systems, the renal, the reproductive, the musculoskeletal, वो सब ज्वाइन अप करके हमें क्या करेंगे? एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बना के देंगे. यहां तक बात समझ में आ रही है मेरे बच्चे लोग? यहां तक कोई मसला बच्चे लोग? एनी प्रॉब्लम सो फार गाइस? कैसा वाला ऑर्गेनिज्म आयशा बच्चा? मल्टी सेल्यूलर. ओके. ओके. अच्छा. अब now out of all of this, what I am most interested in are the organs, right? अच्छा. अब मुझे एक बात ही बताओ मेरे बच्चों, कैन यू गाइस सी ऑर्गन्स? क्या तुम लोग ऑर्गन्स को देख सकते हो? Yes, we can, right? For example, if you were to look at yourself in the mirror, you can actually see where your eyes are. You can actually, appreciate where your ears are. If you're going to open up your mouth, you could actually see your tongue, your teeth. बात समझ में आ रही है? Okay. Similarly, if I'm going to cut open a person, I could, or an animal, for example, we cut open a bakaras on Bakra Eid. So we could actually see where the heart is, the food that we eat, the meat that we eat is basically, it's an organ, it's muscle. We can actually see where the kidneys are. इससे हमें क्या पता लगा कि to see an organ, we do not need a visual aid. We do not need a microscope to see organs. For that reason, हमारे पास ये जो organs होते हैं ना, these organs are what? They are macroscopic. These organs are what? Macroscopic. एक चीज होती है microscopic. Something that we need a microscope to see. बहुत छोटी है. Macroscope का मतलब क्या होता है? Anything that we can see with the naked eye, right? अच्छा. दूसरी बात हमें क्या पता होना चाहिए organs के बारे में? कि these organs are specific. Specific का मतलब क्या हुआ? Every organ that we have has a particular function. Now let's take an example. Let's go back here. Let's take an example. अच्छा, मुझे बात ही बताओ. Let's say inshallah Zara, in the next 10 years, inshallah, she becomes a cardiothoracic surgeon, right? So what do the cardiothoracic surgeons deal with? They deal with the heart, right? अगर हम लोग एक हार्ट का एक simplified structure बनाएं, so heart कैसा होता है हमारे पास? Heart is pretty much something like this, right?
And now the heart is hollow on the inside. The heart is hollow on the inside. Why is it hollow? So that it could fill up with blood, right? It's muscular on the outside. So every time it contracts, it could force the blood out, right? अच्छा क्या हुआ? So Zara was dealing with a patient who was there for a heart transplant. अब मसला ये आया कि भाई जारा के पास तो डोनर हार्ट नहीं था. हाँ, जारा के पास एक डोनर किडनी रखी हुई थी. So what if she, puts this particular kidney in place of the heart in that patient? Will that person survive? Nope. Nope. Why? Because the kidney cannot is concerned with excretion, and it cannot carry out the pumping mechanism of the heart. अच्छा भाई क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि किडनी अनलाइक द हार्ट इज नॉट हॉलो. हॉलो तो नहीं है. इफ द किडनी इज नॉट हॉलो, तो क्या उसके अंदर ब्लड आके जमा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता. सिमिलरली, द किडनी अनलाइक द हार्ट इज नॉट मस्क्यूलर. उसके पास मसल्स नहीं है, so it cannot contract to force the blood out. Make sense? Very good. And kidney as an organ, मेरा बच्चा, is specific for its function, isn't it? तो इससे हमें क्या पता लगा कि for an organ to carry out a particular function, to carry out a specific function, उसके लिए क्या important है? उसका specific structure. Kidney के अंदर we see these tissues called as nephrons. और ये जो नेफ्रॉन्स होते हैं ये एक्सक्रीशन कैरी आउट करवा रहे होते हैं, ये किसी और ऑर्गन के अंदर नेफ्रॉन नहीं है. तो कोई और ऑर्गन किडनी का काम नहीं कर सकता. बात समझ में आ रही है मेरे बच्चों? इससे हमें क्या पता लगा? सर आपने इतनी लंबी क्यों करी? सो दैट वी कुड अंडरस्टैंड दैट an organ is specific in its function because its structure allows it to be. Do we get this यहां तक मेरे बच्चों? Okay. Now, why was I stressing so much on the organs? Is because when we advanced with the microscopes, we found out कि अच्छा सेल के अंदर भी कुछ स्ट्रक्चर्स हैं which have a particular function. कोई एनर्जी बना रहा है, कोई प्रोटीन्स के लिए कोड कर रहा है, कोई प्रोटीन्स बना रहा है, कोई सेल डिविजन में हेल्प कर रहा है, कोई एब्जॉर्प्शन कर रहा है, कोई मूवमेंट में हेल्प कर रहा है, राइट? बट द प्रॉब्लम वाज कि and why did they have a specific function? Because उनका स्ट्रक्चर स्पेसिफिक था. बट द थिंग वाज कि अनलाइक द ऑर्गन्स, वो मैक्रोस्कोपिक नहीं, वो माइक्रोस्कोपिक थे. भाई अगर सेल इतना छोटा है कि मुझे माइक्रोस्कोप चाहिए होता है, तो सेल के अंदर कोई चीज होगी वो भी तो छोटी होगी ना. तो हमने उनका नाम क्या रख दिया? वी स्टार्टेड टू कॉल देम लिटिल ऑर्गन्स. लिटिल ऑर्गन्स in Latin is what? Organelles, right? So we have these structures called as organelles that are present inside the cell, right? That do what? That carry out specific functions. Why are they able to carry out specific functions? Because they have a specific structure. They work on the basis of a phenomena that we call as division of labor. अच्छा, डिविजन ऑफ लेबर का मतलब क्या हुआ? व्हाट डू मीन बाय द वर्ड डिविजन ऑफ लेबर? काम डिवाइड करना. Let's say, one day what we do is we randomly decide that we have to clean the classroom. हमें classroom को साफ करना है. So let's say usually if I would have a group of students, so I would tell them कि what I'm going to do is I'm going to sweep the floor. I'm going to मैं झाड़ू लगाऊंगा. I'm going to ask a student of mine to mop the floor. I'm going to ask another student to clean the fans, another student to dust the tables. तो हम 5 लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास क्या हो रहा है? पूरी की पूरी क्लास साफ हो रही है.
डू वी गेट इट? तो काम तो हम लोगों ने एक दूसरे के ऊपर डिवाइड कर दिया, लेकिन एक पर्टिकुलर फंक्शन कैरी आउट हो रहा है। इसी तरीके से सेल के अंदर भी जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो अलग अलग काम करते हैं। एक डिवीजन कैरी आउट करवा रहा होगा, एक एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा होगा, एक प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। डज दिस मेक सेंस मेरे बच्चों? यहाँ तक बात समझ में आ रही है? डू वी हैव एनी प्रॉब्लम स्टिल हियर? All right. Now, okay, now that we know our basics, now what we'll do is we'll go for a little comparison. देखो, organelles क्या होते हैं ईशा बेटे? They're small structures that are present inside the cells that have different functions. And because they're carrying out the different functions, the cell is able to carry out its specific function. For example, एक सेल है, for example मसल सेल है ना, उसके अंदर एक ऐसा ऑर्गेनल होगा जो प्रोटीन्स बहुत ज्यादा बना रहा होगा, बिकॉज प्रोटीन्स आर नीड फॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ठीक है? So we'll come to the different organelles, don't worry. Acha, so now what we'll do is we'll compare an animal cell with the plant cell, right? You're welcome, Biche. So सबसे पहली चीज हम लोग क्या करेंगे? We're going to talk about the organelles that are present inside a typical animal cell. अच्छा, what do we mean by typical animal cell? कोई ऐसा animal cell नहीं है जिसके पास सारे organelles होंगे। तो हम लोग typical का मतलब ये हुआ कि हम we're making an animal cell that we are showing to have all the organelles that can be found inside an animal cell, कि भाई इसके अंदर वो सारे organelles हैं जो एक animal cell के अंदर हो सकते हैं। All right, now so एक चीज अब, since we're going to compare the animal cell with the plant cell, एक चीज याद रखिएगा मेरे बच्चों, एनिमल सेल्स हमारे पास जो होता है ना, कंपेयर टू प्लांट सेल्स, दे आर इरेगुलर। व्हाई आर दे इरेगुलर, व्हाई आर द प्लांट सेल्स रेगुलर? विल टॉक अबाउट दैट आफ्टरवर्ड्स। लेकिन हमें क्या पता होना चाहिए, एनिमल सेल्स होते हैं वो इरेगुलर होते हैं। इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि उनका कोई शेप नहीं होगा। हमें पता है कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो बाई कॉन्केव होते हैं, राइट? लेकिन उनकी जो बॉर्डर्स होंगी वो वेवी सी होंगी। हमारे पास जो ट्रैकिया विंड पाइप के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जो रेक्टेंगुलर होते हैं, वो रेक्टेंगुलर तो होंगे लेकिन वो थोड़े से इरेगुलर से होंगे। ठीक है जी? नाउ सो लेट्स ड्रॉ अ स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल एनिमल सेल। सबसे पहली चीज, क्योंकि हम लोग एक सेल बना रहे हैं, तो सेल तो एक अलग स्ट्रक्चर है, तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, हमें उसको डीमार्केट करना पड़ेगा, हमें उसकी बॉर्डर्स बनानी होंगी, राइट? नाउ दिस बॉर्डर ऑफ द सेल इज एन ऑर्गेनल, सॉरी, और ये कौन सा ऑर्गेनल है? व्हाट डू वी कॉल द बॉर्डर ऑफ द सेल? This is what we call as the cell membrane. Cell membrane is the first organelle that we have, right? अब सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए सर? सबसे पहली चीज दैट वी शुड नो अबाउट द सेल मेम्ब्रेन इज उसका नेचर क्या है। नाउ थिंग्स कैन अलाउ, or the membranes could allow everything to pass through, or there are some membranes which is selective. वो कहेंगे अच्छा तुम पास कर सकते हो, तुम पास नहीं कर सकते, ये चीज जाएगी, ये चीज नहीं जाएगी। When we talk about the cell membrane, सेल मेम्ब्रेन हमारे पास जो होती है उसका जो नेचर होता है वो पार्शियली परमिएबल होता है। वेरी गुड। वो सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, या फिर हम लोग कहते हैं वो कैसा होता है, वो सेमी परमिएबल इन नेचर होता है। इट विल ओनली अलाउ अ फ्यू थिंग्स टू पास थ्रू, सिलेक्टिव थिंग्स टू पास थ्रू, बट नॉट एवरीथिंग। मेक सेंस? अच्छा, दूसरी चीज हमें क्या पता होना चाहिए अबाउट द सेल मेम्ब्रेन, ये बनी हुई किससे? देखो बेटे, our body is made up of three biological molecules: carbohydrate, lipids, and proteins. Most of the structures that we have are made up of protein. If you would talk about our hair and our nails, keratin. If you would talk about the coloring pigment of the hair, the eyes, the skin, melanin. अगर हम बात करें कि भाई हमारे जो बोन्स हैं
उसके नीचे जो प्रोटीन है जो उनको शेप दे रहा है वो क्या है? कोलेजन है। मेरे लिगामेंट्स, मेरे टेंडेंस, मेरे मसल्स के अंदर भी कोलेजन होता है, राइट? If you would talk about all the enzymes that we have, what are enzymes made up of? Proteins. हीमोग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। एंटीबॉडीज मुझे डिफेंस प्रोवाइड कर रही हैं, क्या है? प्रोटीन्स है। सो मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स दैट आई हैव इन माय बॉडी दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। लेकिन कुछ हमारे पास स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट से भी बने होते हैं और लिपिड से भी बने होते हैं। सेल मेम्ब्रेन हमारे पास जो है वो किससे बनी हुई है? इट्स मेड ऑफ लिपिड्स, राइट? मॉडिफाइड लिपिड्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड कहते हैं उससे। लेकिन फॉस्फोलिपिड हमारे पास एएस लेवल के अंदर जाके वो हमें इंट्रोड्यूस करवाएगा। तो अगर हम लोग लिपिड्स भी याद रखेंगे तो दैट्स गोइंग टू बी मोर देन इनफ, राइट? तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में, जो हमारे पास सेल की बॉर्डर है, उसके बारे में हम लोगों ने दो चीजें सीखी। व्हाट इट्स मेड अप ऑफ, और उसका नेचर क्या है। वो सेमी परमिएबल है, एंड इट्स मेड अप ऑफ व्हाट? इट्स मेड अप ऑफ लिपिड्स। ठीक है। अच्छा, हमारे पास सेल की बॉर्डर तो आ गई। Now what we need to do is we need to give rise to life inside of the cell. So what are we going to put inside the cell? We're going to put the protoplasm. लेकिन जब ये प्रोटोप्लाज्म सेल के अंदर जाएगा टू मेक इट अ लिविंग स्ट्रक्चर, अब वो बेसिक फ्लूइड नहीं रहा, वो तो सेल का फ्लूइड बन गया। What are you going to call the fluid of the cell? The cytoplasm. Very good guys, very good, very good. ठीक है। अच्छा, साइटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म की तरह इट्स जेल लाइक फ्लूइड व्हिच कंटेन्स डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस, all the right reactions required to generate life are going inside of it। ठीक है। नाउ फिलहाल हमारी प्रायोरिटी साइटोप्लाज्म नहीं है, हम इसके बारे में बात करेंगे थोड़ी देर में। लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड ऑर्गेनल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। लेट्स टॉक अबाउट द न्यूक्लियस। So we have an organelle that looks like this. It has two membranes and it has pores in it. All right. फिर उसके अंदर एक ब्लैक कलर स्पॉट भी आता है इस तरीके से कुछ, और फिर उसके अंदर कुछ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स भी होते हैं इस तरीके से, राइट? सो व्हाट इज दिस ऑर्गेनल कॉल्ड एज? दिस ऑर्गेनल दैट वी हैव, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, द थर्ड ऑर्गेनल दैट वी बी टॉकिंग अबाउट इज द न्यूक्लियस। अगर हम बात करें न्यूक्लियस के बारे में, सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस? हम कहते हैं कि भाई द न्यूक्लियस कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। कि सेल को करना क्या है, कौन से वाले केमिकल रिएक्शंस कैरी आउट करवाने हैं, कौन से वाले केमिकल रिएक्शंस कैरी आउट नहीं करवाने, कौन सा वाला प्रोटीन बनाना है, कौन सा वाला प्रोटीन नहीं बनाना, ये सब कौन कर रहा है? मेरे बच्चे सब न्यूक्लियस कर रहा है। अब टुडे और इन द नेक्स्ट क्लासेस विल अंडरस्टैंड कैसे। ठीक है। सो बिफोर वी कैन टॉक अबाउट हाउ इज द न्यूक्लियस कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ द सेल, हम लोग न्यूक्लियस से कुछ पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस इज दिस मेम्ब्रेन। उसकी मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। वही लिप सेल, हमारे पास सेल मेम्ब्रेन की तरह लिपिड्स की बनी हुई है, लेकिन क्योंकि वो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, हमने उसका क्या नाम दे दिया? हमने कह दिया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इफ आई वुड आस्क यू गाइस टू गिव मी अ डिफरेंस बिटवीन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द सेल मेम्ब्रेन, एक तुम डिफरेंस मुझे क्या बताओगे? कि सर सेल मेम्ब्रेन पूरी की पूरी इंटैक्ट है, कोई ब्रेक नहीं है उसके अंदर। लेकिन आपने ना जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाई है उसके बीच में आपने गैप्स डाले हुए, दीज गैप्स। तो इससे हमें क्या पता लगा? कि हमारे पास जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना मेरे बच्चे, इट हैज होल्स, इट हैज पोर्स। सो दैट्स व्हाई वी से दैट द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज पोरस। वेरी गुड लक्ष्य। अच्छा, अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स हैं, सो कैन सम ऑफ द साइटोप्लाज्म लीक इन? यस इट कैन। अच्छा, साइटोप्लाज्म वाज अ फ्लूइड ऑफ द सेल ना,
लेकिन जब ये साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर जाएगा, अब तो ये न्यूक्लियस का फ्लूइड हो गया, इट्स नो लॉन्गर द फ्लूइड ऑफ द सेल। तो अब इसे क्या बोलोगे मेरे बच्चों? कौन सा वाला प्लाज्म बोलोगे इसे? न्यूक्लियोप्लाज्म। कोई फर्क नहीं है मेरे बच्चों, बस लोकेशन अलग हुई तो हमने उसको नाम अलग दे दिया। अच्छा सर, आपने नाम अलग क्यों दिया? अब इसको देखिए, अगर मैं तुम देखो नेम से ना हम लोग लोकेशन स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब मुझे एक बात ही बताओ, मुझे पता है कि डीएनए सेल न्यूक्लियस में होता है, सेल में नहीं मिलेगा ना। अब मैं अगर तुम लोगों से बोलूं कि द डीएनए इज फाउंड इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, तो तुम लोग कहीं और नहीं देखोगे, तुम लोग सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर देखोगे। अगर मैं तुम लोगों से कहूं, सॉरी, अगर मैं तुम लोगों से कहूं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज इन द साइटोप्लाज्म, अब तुम लोग इस जगह पे देखोगे, न्यूक्लियस को नहीं देखोगे। मेक सेंस गाइस? तो नाम से लोकेशन स्पेसिफाई हुई होती है। ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास तीसरी चीज क्या आ जाएगी? दीज thread like structures that are present inside the nucleus, you know, the ones that I've drawn in purple, right? These thread like structures, these ones, what do we call these thread like structures? Does anyone know? These thread like structures are called as chromatin fiber। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? क्रोमैटिन फाइबर। ये ड्यूरिंग सेल डिवीजन किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? क्रोमोसोम के अंदर। क्रोमैटिन फाइबर और क्रोमोसोम के बीच में कोई फर्क नहीं है। अच्छा, so what's so special about the chromatin fiber, sir? Why are you teaching us this? These chromatin fibers, what do they contain? हम कहते हैं chromatin fibers, they contain the genetic material DNA। और ये जो डीएनए हमारे पास होता है, this DNA is made of what? It's made of genes। बात ये आती है कि सर, what are genes? So we're going to write down कि भाई हमारे पास genes क्या होते हैं, right here, so that we know what to discuss in the next class, right? हमारे पास न्यूक्लियस का एक और पार्ट रह गया है, this black spot, right? So we'll discuss all of this in the next class, right? It's deoxy ribonucleic acid beta, right? So we'll stop here today.